तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये इतना तक करेंगे। तो ये पूरा बोला कि ये सारे कुछ बोल दिया, तो हम क्या करना है पहले, ये न्यू क्वेरी ले लेंगे। we will take the new query and select star from this dot tables, as we know to get all the tables here. So to get all the tables here, we can execute from directly here. Go, and when you execute, all you'll get all the tables. If you want to select all the tables, if you want to select all the tables, then that's the reason I'll try to tell the students to use this SSMS Studio. It is very good enough to complete all this. So like to get or to select all these tables, select a star from. ये होता है Shift Alt, yeah, Control V. So now, whenever you are executing, suppose you are executing in the real time and you are in a production environment. When you when you are in production environment environment, you are not supposed to execute like this, because the those tables are in very high level of size. So better to create a top one ऐसा टॉप 10 to ऐसा 10 ऐसा लगा सकता है 10 ऐसा. So this star, I think, if I execute this, so that I'm getting all the tables, right? So what in case if I say this top 10, what in case if I say this top 10, I got a doubt while I'm teaching you that see, what in case if I keep control X, and if I keep control V. What if I keep like this? I think it won't execute. No, right? So control Z, control Z. This is the correct way. Top is supposed to keep after the selector. Okay. So when you execute this, we are getting all the details of the tables. So right now I like to work with orders table. Orders table. Select a star from tables. So we will take this table, and we are working right now. We are working with orders table. Orders table. Okay. So now to know the table structure, to know the table structure, to know the to know the to know the table structure, to know the table structure, what command we have? I asked AI, right, to know the table structure. Okay, structure spelling is wrong. Structure. Okay, structure. To know the structure, so what it is? So the structure is exec space sp underscore help space, in the codes you're supposed to give the table name. So exec, I mean syntax क्या होता है? To know the table structure, syntax, what is the syntax? If you say the syntax is syntax is exec underscore help. syntax ऐसा होता है कि ऐसा बोल सकता है. तो यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं होता है, यहाँ पे ये टेबल नेम होता है. ये टेबल. सो आज अभी तो ऑर्डर्स हो गया, बाद में आइटम्स हो सकता है, बाद में कैशियर्स हो सकता है, बाद में ऑर्डर आइटम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो we will get the table structure. So when you if you can type this, right, copy, and if you can give this to AI now. Yeah. So if I give this entire definition,
सो ऑर्डर स्ट्रक्चर सब बता रहा है, ठीक है। वो सब बता रहा है, okay, ऑर्डर स्ट्रक्चर ये सब बता रहे हैं। नहीं, नाउ व्हाट व्हाई आई गेव दिस डेटा टू एआई to insert the data, because we I am giving the correct information to the AI, right? Before I gave the information in the previous class. I gave the information like this. If I give the information like this, it may not understand whether this one is character or not. This one is int or not. What is this? What is this? Maybe it may be char, it may be varchar. So while inserting, we may do some mistakes. For that reason, I got the complete information of the table by exec sp underscore help, and in between the quotes we are giving the table name. So when you execute, you get all this information. Once after you get the information, right? What you can do? I gave this information, and I'll ask the and now insert some data into the orders. So to so now I'm getting the insert. I mean to say, you can see this. You can see this how he is inserting. So the sample insert into script for 30 rows for the table. So if you see insert into table name, okay, table name, table टेबल name नेम के हाँ, नीचे में जो आ रहा है कोडिंग। वो कोडिंग क्या है, उसके उसके अंदर वैल्यूज डाल रहा है। उसके ओके। अंदर वैल्यूज डाल रहा है, पूरा वैल्यूज डाल रहा है। एक 30 वैल्यूज डालने के लिए मैं बोला था, पहले ही बोला था, इससे पहले बोला था। आप यहाँ पे देख ले तो मैं बोला कि इसको मैं ऐसा दे दिया कि आप लाइक दैट वाज लाइक that only I'm explaining you. Before हम्म। that, to the before, how I gave the how I gave AI to insert the data. I have said to insert the data by just executing this. I have executed this and I copied like this. I copied like this, and you can see the same thing I have given to the AI. I mean order ID, token ID. You can see this, right? यस। The same I have given to the AI, and what I asked, insert 30 rows of data into it. So what it thought, this order ID, what is this order ID is all about? When you go under canteen billing system, when I expand this orders table, right? When I expand this orders table, if you can see here, order ID PK int not null, uh, int no primary key not null, टोकन इंट एन, ये देखो, यहाँ पे इन्हों सोचा है कि ये वैर कह रहे, मगर असली में क्या है, वो एन वैर कह रहे, है ना? हम्म। और डेट टाइम और कैशियर आईडी एफ के है यहाँ पे, है ना? मगर यहाँ पे क्या है, डेट टाइम डेट टाइम है है। ना? हाँ, तो इतना, so might be the assumptions, if you are asking to AI, you are not supposed to ask with just like this. Okay, so for that what I did, I got the complete information with the help of to know the table structure with the help of exec sp underscore help, so that if I executed this, then if I execute this, right, so that it and now I got complete information of the table, so that I gave this table to the AI. Okay, now I gave that this table. Now if you can see this information, I gave it to the table, to the name to then I asked AI to know the table structure. So it gave me to know the table structure, you need to give this, and that was I've executed, so that I got all those, and information schemas, all those I will get it. That is fine. Now, if you can see, then later on I gave this information, what this information, when you execute this, right, you got this information, so all this information I gave it, so it understood the structure. Then I asked, now insert some data into the orders. ठीक है, now insert किया, तो हम ये insert किया, तो हम ये insert करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अभी paste. Now, if I execute, what will happen? What will be the execute?
uh, identity column in the orders is set to off. Okay, identity in the call keys. uh, so if I give this identity set, बोले तो क्या है कि आइडेंटिटी बोले तो आपको मालूम है, फिर भी हाँ. ये इसको इसको दे देता हूँ, तो क्या बोल रहा है देखो. The error you're seeing cannot explicit value for identity column is table of table orders. So solution option insert into orders value सब ठीक है. Don't include order ID. ऑर्डर आईडी को इंक्लूड मत करो बोल के बोल रहा. तो क्या करेंगे, इन्हों क्या कर रहा, सिर्फ ऑर्डर आईडी को निकाल दे रहे. तो हाँ, वो निकालने के लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उन्हों वो ही निकाल रहे हैं ना, हम ऐसे कर सकते हैं कि शिफ्ट आल्ट. ओके, शिफ्ट आल्ट. नाउ down. Okay, let's try with this. Okay, let's try with this. No, we will remove entire thing. Now let's try with this. What will happen? Syntax error 101. Cause 101 is already there, I think, so far. Control K, Control C. What will happen till 1? So, no, till here. Common है लगा सकते हैं. Insert. There are more columns insert into specified values, number of more columns. ऐसे हो सकता है. फिर उन्होंने क्या दे रहा है देखेंगे. कॉपी न्यू क्वेरी, ये तो वो हो गया. So let's understand with this. Near near क्या है? So I think we are doing something wrong till here. No, till here we can execute. Unique key constraint, the duplicate key is 101. That's what I think. Now he can continue. That's what I will say it something to you. I think you may not understand, but foreign key. अरे इतना सारे कुछ नहीं होना यार. लाइक ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, फिर भी ये भी बोल सकते हो उसको. कैनॉट फॉरेन. ये ये ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ कि आई टेल यू, लेट्स नॉट continue with this orders table. Okay, okay. because why because it is in the schema, and it is with all with I mean to say it is linked up with multiple tables. Okay, multiple tables in the sense, if you can see here, this is foreign key, this is foreign key fk. Now what Okay. it is saying, if I say this message to the AI, what it is say, what it will say, if you see that also, I'll ask, did I say to AI now. समझ में आ रहा. तो बिफोर इंसर्टिंग इनटू द ऑर्डर्स, मेक श्योर दैट रेफरेंस आईडी वैल्यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. तो ये हो रहा है, तो पहले ये करना है. ये बोल रहा है कि पहले कैशियर्स कैशियर्स की टेबल है ना, उसमें तो ये होना है कि कैशियर आईडी होना है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे देख लिया तो अभी इंसर्ट इनटू कैशियर्स, यहाँ पे नहीं है अभी. कैशियर्स का टेबल कैसा है, ये ही करेंगे, उसमें क्या है, दूसरा टेबल क्यों. अभी टेबल को क्या कर सकता है कि स्क्रिप्ट इंसर्ट इनटू है ना, इंसर्ट इनटू न्यू क्वेरी एडिटर. न्यू क्वेरी एडिटर अभी इंसर्ट कैसा करता है, वो ऑफिशियल में आ जाता है. यू विल गेट इन ऑफिशियल, like use database name and insert into the values. Now we will give this query, we will this query to the AI. Now it will insert in a proper way.
So now if I go here and if I enter this, now I can insert it. Now unique key constraint, I think employee 001 is already there, that's the reason unique key constraint is there. If you can see the table, if you can ask the table, if you can see execute, I mean this already employee 11 is there, that's the reason it is not coming. That's the reason what it said key, if you can, if when you execute this, the violation of unique key. अभी इसमें क्या है कैशियर्स में, ये इसमें कैशियर्स जो भी है ये पी के है, तो ये यूनिक की है, प्राइमरी की कंस्टेंट है। तो इसमें एक एक जो भी एम्प्लॉय कोड भी है वो भी यूनिक रहता है, यूनिक बोल के लिखा है। कीज में देखे तो आप, अगर कीज में देखे तो पता चलता है कि एमपी यूनिक की कैशियर्स बोले तो ये जो भी कैशियर्स है वो यूनिक होना है, उसके लिए नहीं आ रहा। तो अभी कंट्रोल के कंट्रोल सी करवा दिया तो ये आ जाता है, ये आ जाता है एग्जीक्यूट, आ गया 3 रोज अफेक्टेड। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैशियर्स देखे तो आपको 4 कैशियर्स होता है, ये सीता देवी एक कैशियर है, जॉन डो एक कैशियर है, आयशा खान एक कैशियर है, सा एक कैशियर है, इतना लोग कैशियर है किसमें, अपन का कैंटीन सिस्टम में। कैंटीन में 4 लोग काम कर रहे हैं, वो 4 लोग का नाम साई है, सीता है, जॉन डो है, आयशा खान है। तो अभी ये पहले ये होना उसके बाद ही होता बोल के बोल रहा। तो ये सारे कुछ copy with headers. Now if we give to AI, AI will say that thanks, based on your cashiers table you got it, now you can safely insert rows into the orders table। अभी जो भी इंसर्ट कर रहा था ना, इंसर्ट इनटू ऐसा ऑर्डर्स टेबल में कर रहा था ना, ये पहले भी इंसर्ट इनटू ये सब कर रहा था ना, ये सब कुछ नहीं हो हाँ। रहा ना, एरर्स आ रहा ना। तो उन्होंने बोल रहा अभी आप कैशियर में पहले ही कर दिया, तो अभी ऑर्डर्स का होता है। तो अभी ऑर्डर्स का आप देख लिया तो ऑर्डर्स का भी क्या बोलना है ना, ये 101 पहले ही ये बोल के उसको बताना। कैसे बताते हैं कि हम ऐसे नया क्वेरी ले लेंगे। अभी यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डालते ही एफ आई डालते ही ऑलरेडी फर्स्ट रो इज देयर, राइट? कॉपी विद हेडर्स, ऑलरेडी फर्स्ट रो इज देयर, ऑलरेडी first row is there. It means it means now not it will not insert again, correct? आपको बताने के लिए फिर से बाहर रहा हूं, मेरे को मालूम है, ठीक है। हम्म। Correct, you can see, correct, if the first row with order id 1 already exists, you must not try to insert it again, especially if order id is an identity column or primary key. What you should do, you can try with this, okay? Now if I can try with this, if I can execute क्या हो रहा, 2 rows affected है। अभी select star from orders करते ही आपको क्या आना है, select star from orders कहाँ है, कहाँ लिखे है, हमें कहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ही लिख सकते हैं, select star from orders, star from orders, correct? So we supposed to have 3 rows now. Now we got 3 rows, right? Right. So we got 3 rows. Now similarly, actually so now we got, yeah, it's worked. It's worked. Now insert more 10 rows. Bus. Okay. Now after that, I'll tell you what is the main purpose of having procedures.
And till that point, I'll now it is loading. Till that point, we can have some more knowledge. Okay, let's रहे तब तक हम ग्रोक भी आज ग्रोक एआई को भी इस्तेमाल करें, यूज कर दें ग्रोक ग्रोक सॉरी ट्राई ग्रोक. So in grok what we will ask, so procedure. So now you know how to create the procedure. Orders table आया था ना, orders table में हम procedure भी create करते थे ना. प्रोसीजर कैसा एग्जीक्यूट करते हैं मैडम, याद है? Yes. कैसा? टेबल में जाना है. प्रोसीजर को एग्जीक्यूट ऐसा नहीं करता है, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कैसा करता है, एग्जिक बोलते हैं, एग्जीक्यूट कैसे, एग्जिट. हाँ हाँ एग्जिट. एग्जिक. हाँ डोंट एग्जिट. फॉरगेट, डोंट फॉरगेट. आई डोंट फॉरगेट. Okay. Now, what if I execute this? What I'll get the answer? So you got the answer, right? I mean, if you execute the exec, I mean, how to execute the stored procedure is like, as per actually we are executing the stored procedure by just using exec. I mean, just we are executing the stored procedure with just with this, not with anything, just with this. I mean to say, not all this also, return value सब में रहता है, just ऐसा हम execute कर रहा है ना, ऐसा एग्जीक्यूट मैं क्या बोला, स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना कैसा होता है कि अंडर स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या है, एक स्टोर्ड हाँ प्रोसीजर का हम स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर रहे थे, अगर हाँ. उसको इस्तेमाल करना है तो एग्जिक बोल के लगाता है, एग्जिक बोल के लगाने से के बाद उसका नाम देना है, तो उसका नाम दे रहा है तो एग्जिक बोले तो एग्जिक होगा. मगर जैसा अभी देखो, टेबल से, अभी टेबल से, अभी टेबल को कैसा कॉल करते हैं मैडम, टेबल को कैसा कॉल करते हैं? इस सिलेक्ट. हाँ, सेलेक्ट से कॉल करते हैं. बढ़िया, ये भूल गया तो मैं डर जाता था अभी. सेलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम, तो हाँ, तो ऐसा कॉल करते हैं है ना, हाँ. ऑर्डर्स को ऐसा ऐसा ऑर्डर ऐसा करते हैं. मगर अगर प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करना बोले तो एग्जिक बोल के एग्जीक्यूट करते हैं है ना. एग्जिट. हाँ. हाँ, सॉरी, एग्जिक बोल के एग्जीक्यूट करता है. तो यहाँ पे क्या है, मगर तब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप सोच रहे हैं कि ऐसा एग्जीक्यूट करना सही तरीका है, हाँ. मगर मगर अगर सिलेक्ट करना है, एक टेबल को कॉलिंग करना है, ये ऐसे हाँ. नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. कभी कैसा होता है ना, तब कॉलिंग होता है, अगर राइट क्लिक करे तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज है ना, अगर ये ऐसा क्लिक करे तो ये आपको अभी आता देखो, सेलेक्ट टॉप 100, ये टॉप निकाल दो, टॉप निकाल से सेलेक्ट ऑलरेडी, ये सब कैसे लिखा, कैसे 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 लिखा है, ठीक है, नो कैसे लिखा, ये भी सेम आंसर है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम भी यही आंसर है, आप देख लिया तो, है ना. हम्म. मगर जब हाँ,
Hello. Yes. So I got a call. So when we are asking to SSMS Hmm. to call this orders table by using GUI बोले तो GUI यही है ना, graphically Hmm. आ रहे हैं अपन. So when we are selecting like this, it is showing like this. You're getting my Okay. point. Yes. When I'm calling view, when I'm Hmm. calling view from here, select top 1,000 rows. When I'm calling like this, so he see how it is calling the I mean to say to view, it is calling like this, right? Right. But when you say to procedure execute stored procedure, so you'll have like this. You can see this is the way to execute stored procedures. जैसा है भाई, पहले यूज लिखना है, उसके बाद कुछ रिटर्न वैल्यू होता है उसका. ओके. उसका इंटीजर होता है, इंटीजर में ना है तो किस में होना, और एग्जिक. ठीक है. एग्जिक एग्जीक्यूट रिटर्न वैल्यू आता है बीच में, रिटर्न वैल्यू में यहाँ पे देखो अभी वारकर लगा दिया, वारकर भी लगाते होंगे लोग, ऐसा कुछ भी लगाते होंगे वारकर. ऐसा तो नहीं है, मगर ऐसे भी कर सकते हम. ठीक है. ठीक है. रिटर्न वैल्यू जीरो आ रहा, पहले इंटीजर आया, पहले अभी जीरो आ रहा, कुछ नहीं है, तो ऐसा एग्जीक्यूट करता है किसको, प्रोसीजर्स को. तो हम का क्या है, अभी देखो मैं क्या बोला आपको, ये छोड़ के I'll close this. Now I'll also close this. Now we will insert some data using. Now we will insert some data. Hmm. Insert some data. उसको मैं बोला और 10 भी. No, no, no. I don't want. No. So I asked AI to insert more 10 rows, but it is still taking time. That's okay, not a problem. So what we can do, we can use this. I think it is taking much time, not a problem. So enter when we want to insert more data into. No, this data is more than enough. Now what we will do, I'll just close all these, close all, close all documents. No. Now new query. So I took a new query. So in this, I want to work with stored procedure. In the stored procedure, I am working with sp underscore orders. So इसको हम alter करना है. Script alter to new query editor. Now, when you see this, when you see this is the procedure, this is the altered procedure. Now we need to, now this is the alter procedure. How we will actually do this. तो हम मेरा क्या है कि select star from view orders है ना, इसमें हम I want to alter this procedure. Okay. Now control C, control V. I want to alter this procedure and insert using procedure to the table of to the table uh, orders. Now you will get to understand what it will say. When you go down, it is creating something.
Yeah. So, it has been created a lot. Now, super. अच्छा है. Now I will copy this. इतना अच्छा हो गया यार. क्या बोलते हैं एआई से आजकल. So when you click on new query, if I paste that, so if you can see, I'm altering the procedure. I'm altering the procedure. So I'm not going to explain anything in this, right? Currently, okay. But I'll Okay. explain you each and everything. धीरे धीरे हम समझ में लेंगे. मगर Okay. उससे पहले यहाँ के क्या है कि मैसेज इन प्रोसीजर इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी स्टेटस. इस ये तो स्टेटस नहीं था. टेबल का स्ट्रक्चर इसको नहीं मालूम पता है. उसको उसके लिए तो ये सारे कुछ बकवास दे रहे हैं. ठीक है. तो पहले ये क्या सोचेंगे कि एसपी अंडरस्कोर ऑल्डर तो ऑल्डर कर रहे हैं. तो ये कर रहा है तो एसपी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू व्हाट वी विल डू, वी विल एग्जीक्यूट this, not this, not this, so that we will have proper information of tables, right? Right. So once we have the proper information of the table, copy with headers. So if you go to here, now if I enter, this is the actual table. Now, thank you for providing the schema of the orders table. Based on this, I'll modify the SP order store procedure to include an insert operation tailored to the actual table structure while retaining the existing select functionality. This schema includes order ID, token ID, something. Okay, fine, not a problem. So if I can copy and if I go there and if I control A, control V, अभी execute करे तो execute हो गया. ठीक है. Yes. अपन अभी अभी एग्जीक्यूट हो गया. होता है वो एग्जीक्यूट होता है. ये समझ में लेना बढ़िया है. ठीक है. नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड. लेट्स so I asked to execute the procedure. Let's see the procedure has been created or not. First of all, I'm just refreshing from programmability. Once you expand this stored procedure, once you expand this, so you can find the procedure which you have created as of now. What we have created sp underscore. No, we didn't create it. That sp Mhm. underscore create already there. We just altered it, right? Actually, so execute stored procedure. Then now see uh, action. Okay. Wait, if I click on OK, what will happen? Window affected. Oh, I mean, नहीं 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 हुआ. नहीं 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 मैं गलत कर रहा था कुछ. ठीक है. तो exec sp at the rate select हम एक क्या करते हैं, execute new query ले लेंगे. execute. तो पहले at the rate action exec हम क्या कर रहे हैं, executing the select action purpose retrieve all orders from view orders underscores SQL command. Next what next we got some information 1 2 3 4 something information. Next executing the insert action. अभी देखो यहाँ पे देखो. Okay, action selector. Now action. Now here the action button is insert. Okay, insert. अभी देखो. Insert. अब ये सोचते हैं कि 125 विल नंबर एंड 101. नहीं तो अभी देख लो आप. अभी क्या हाँ. है, अभी टेबल है ना. हम पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स करते ही 3 टेबल था, ठीक है, हाँ 3 टेबल था। तो हम क्या करेंगे अभी, बिल 10, अभी ये है ना, ये सारे कुछ है ना, कॉपी विथ हेडर्स। तो कॉपी विथ हेडर्स नहीं, सिर्फ कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, तो क्या है, पहले ऑर्डर आईडी है, टोकन नंबर बोल रहा है ना, 107 तो है, तो 125 तो नहीं है, तो दे दिया। तो बाद में बिल नंबर 107 ऐसा बोल रहा है कि बिल 202 लगा देंगे, इतना सारे कुछ क्यों, है ना, 108 लगा देंगे, है ना, हम्म 108, 108। नाउ कैशियर आईडी 101 ऐसा नहीं है, हमको 125 ही है ना, 125 ही है। तो 1 भी लगा सकते हैं आप। आपको कैशियर आईडी पता है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैशियर्स में देख लिया तो कौन सा एम्प्लॉय कैशियर आईडी है, कैशियर आईडी 1 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मगर इनो क्या बोल रहा है, इनो, नहीं नहीं, इनो क्या बोल रहा है, इनो क्या बोल रहा है कि, आप देख सकता है कि उन्होंने क्या बोल रहा है, @ कैश नंबर बिल इतना दे दो, कैशियर आईडी 101, उसको क्या पता है कैशियर इतना ही है, उसके वाले उन्होंने ऐसे दे दे। कैशियर आईडी 1 बताया, सेल्फ सर्विस भी सेल्फ सर्विस भी 1 बताया, टोटल क्वांटिटी इतना बताया, ग्रैंड टोटल भी इतना बताया। तो अभी ये एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करता है, न्यू ऑर्डर आईडी 6 आया। तो न्यू ऑर्डर 6 आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करते ही अभी 4 आ गया, देखो 125 एग्जीक्यूट होगा, गेटिंग माई पॉइंट, 125 yes एग्जीक्यूटेड, yes yes अंडरस्टूड। yes You're say, what all actions are happening, the logic we made here only। अगर यहाँ पे सेलेक्ट किया, लॉजिक उन्होंने उसका नाम ये है कि सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया तो एक्शन सेलेक्ट, तो यहाँ तक किया तो क्या है, तो ऐसा आ रहा है, सिलेक्ट है ये, यहाँ पे एक्शन चेंज करो, इंसर्ट भी होता है ना, हम्म गेटिंग माई पॉइंट, yes इंसर्ट। तो प्रोसीजर को ऐसा होता है कि आउटपुट इनपुट पैरामीटर्स होता है, कितना क्या हम्म होता है, आउटपुट output इनपुट पैरामीटर्स, इस सबको पैरामीटर्स ही बोलते हैं। हम बाहर से अभी देखो, अपन इंसर्ट इनटू कुछ लिख रहा क्या, नहीं नहीं लिख रहा, सिर्फ हम वैल्यूज ही दे रहा, ठीक है, सिर्फ ठीक है हम वैल्यूज ही दे रहा ना। फिर से देखो, अभी इंसर्ट इंसर्ट दबा दिया, ये 125 तो ऑलरेडी है, आपको मालूम है, ये हाँ 125 ऑलरेडी है। तो 125 बदल के 126 कर देंगे, ठीक है, हाँ और बिल 108 है, 109 कर देंगे, ठीक है, और कैशियर आईडी 1 है, 4 तक लगा सकते हैं, 5 तक लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं। कैशियर आईडी तो आपको मालूम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैशियर लगाते हैं कि इसमें 1 2 3 5 है, तो कैशियर हाँ आईडी अभी 5 लगा देंगे, ठीक है, 5 तो है ना, 5 लगा देंगे। और सेल्फ सर्विस 1 है, ये सारे कुछ 55 है, ये 559 लगा देंगे, ये 501 लगा देंगे, ये टोटल क्वांटिटी 54 लगा देंगे, कुछ ऐसा लगा दे कि अभी एग्जीक्यूट करते ही एग्जीक्यूट हो जाना है। तो 7, न्यू ऑर्डर आईडी 7, न्यू ऑर्डर आईडी 7 आ गया, न्यू ऑर्डर आईडी 7 आ गया। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स देखते ही कि ये सारे कुछ, ये 126 आ जाना, आ गया ना, हाँ आ गया और ऑर्डर आईडी भी 7 हुआ बोल के भी रिटर्न दे रहा उसको, ठीक है। हाँ तो प्रोसीजर कैसा बना रहे, देख रहा ना आप। हाँ सो हाउ द प्रोसीजर इज, इंसर्ट लॉजिक, सब लॉजिक, ये यहाँ पे पूरा लॉजिक बताया। हम लॉजिक को कुछ समझ में लेने के लिए सोचेंगे, ठीक है। ठीक है तो इसका क्या है, अभी आपको क्या होना, एसपी ऑर्डर्स का टेबल लेके आना, नहीं, प्रोसीजर को लेके आना। प्रोसीजर को कैसे लेके आते हैं कि ऐसा राइट क्लिक करते हैं, और हाँ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करते हैं, और ऑल्टर टू और क्रिएट टू, ये कुछ भी कर ओके सकता है, ठीक है। ऐसे देखो, ऑल्टर टू करेंगे, न्यू क्वेरी एडिटर क्लिपबोर्ड में आ गया। अभी अभी इसको अच्छा तरीके से समझ में लेंगे। तो इफ यू कैन सी
what he's saying about the procedure. Now I didn't ask. I retrieve the products and uh, so let's say to use कैंटीन सिस्टम. अभी कैंटीन यहाँ तक क्रिएट किया पहले. ठीक है. यूज किया डेटाबेस को. बाद में सेट एंड सिनल्स लगा दिया. हाँ, हम Hmm. क्या करेंगे? कंट्रोल ए कंट्रोल सी. एक्सप्लेन. एक्सप्लेन इन. एक्सप्लेन इन लेमन with Hindi and English. Okay. Now I'll not keep this with you. I'll keep with me because I think you can have broad, I mean, larger screen of this. Correct? Correct. So पूरा समझ में लेने के लिए थोड़ा no. So if you can understand the procedures in good enough way, ma'am, Yes. that is more than enough. I mean, so we will understand the procedure. What is the procedure and all. So what सिग्नल सिग्नल वो सब समझ में आ जाते हैं आपको धीरे धीरे पूरा पूरा समझ में आ साउंड नहीं आ रहा है. साउंड नहीं आ रहा है हाँ अभी आया. वो यार वेट आई एम जस्ट so now let's take the new query and understand this in a better way. Control A, Control K, Control C. So if you can see this, if you can see this, now let's understand. All right, let's explain. I mean, all right, let's explain the stored procedure sp underscore orders. sp underscore orders का procedure जो भी है. अब इस procedure कहाँ रहता है आपको मालूम है ना? In simple, non-technical English, like I'm talking to someone who never worked with database before. Oh, super. अभी लाइक ये समझ में दे रहा है कि जैसा डेटाबेस को कभी भी पता भी नहीं है उसको समझ में दे रहा हूँ ना. So I'll walk you through what is this code is and how it works and how to use it, uh, as if it's a tool for managing orders in a canteen. Now, what is this code? This is the stored procedure. I mean to say, now what we can do, we have this code. We can say we can do like this. Now we can understand in this way. Okay. So this is the stored procedure. I mean, this is the stored procedure called sp underscore orders in a Okay. database name in a database name called canteen billing system. So in think of a stored procedure as a button. So stored procedure को ऐसा सोचने के लिए बोल रहा है कि ये जैसा बटन के जैसा है ऑन ए कैश रजिस्टर. ठीक है. ये Yeah. सिर्फ ऐसा जैसा बटन है एट अ कैंटीन. At a canteen, when you press the button it does a specific job for you. I mean, आप जब भी बटन को दबाते हैं तभी एक जॉब करता है. एक स्पेसिफिक एक जो भी जॉब बोलता है वही जॉब करता है. स्पेसिफिक बोले तो पर्टिकुलर जॉब. तो लाइक शोइंग द लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स. आई मीन सब ऑर्डर्स का लिस्ट बताता है और ऑर्डर्स में नया ऑर्डर डालता है. ठीक है. Hmm. You give it some information like what do you want to do. अगर क्या होना है वो प्रोसीजर में आप बताते हैं. ठीक है. मगर वो जैसा है ये एक बटन में हो जाता है पूरा. ठीक है. एक ही बटन में यू व्हेन यू प्रेस द बटन इट विल डू द जॉब. Whatever the jobs you do, that job you will do. Okay, that job the procedure will do. So what does this code do? This stored procedure is like a helper that can do
2 jobs for the canteen. कितना जॉब्स? 2 जॉब्स. अभी ये प्रोसीजर के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ. कितना, कौन सा प्रोसीजर की बात कर रही है? ये प्रोसीजर के लिए बात कर रहा. सारे प्रोसीजर का मतलब नहीं बता रहे, सिर्फ ये प्रोसीजर का समझ में लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ये सबको फिर से, एवरी प्रोसीजर विल नॉट इन बी द सेम, ओके? सेम तरीका होता है मगर अलग अलग होता है. इसमें तो क्या है, इन्हों बोल रहा है कि इन दिस सिलेबस 2 jobs. What are the 2 jobs? One job is this, inserting into the tables, and next job is like returns the new. क्या है दूसरा जॉब है, क्या है कि कौन सा ऑर्डर इंसर्ट किया, कौन सा ऑर्डर हुआ अभी, वो रिटर्न कर रहा है. तो आप भी देख सकते हैं उन्होंने क्या बोल रहा है. फर्स्ट फर्स्ट है कि शो ऑर्डर्स कर रहा है, तो शो ऑर्डर्स कर रहा है, ठीक है? बाद में ये कि ऐड ए न्यू ऑर्डर, कुछ न्यू ऑर्डर क्रिएट किया, न्यू ऑर्डर आया, तो न्यू ऑर्डर का नंबर क्या है वही आ रहा ना. तब आप एग्जीक्यूट कर रहा. देखो तब हम एग्जीक्यूट किया. कौन सा एग्जीक्यूट किया? यही. अगर कुछ एग्जीक्यूट कर रहा, तो एग्जीक्यूट कर रहा, तो अभी इसको भी, इसको यहाँ पे लेके आएंगे. अगर कुछ एग्जीक्यूट कर रहा, इनो क्या बोल रहा, when does this code do, and this stored procedure is like a helper that can do 2 jobs. What all 2 jobs it is doing? It is doing when I say the new token number, and also new bill number, new bill number, and also same cashier ID, self-service one, and also total quantity something else, and also subtotal is also something else, and grand total is also something else. Then if I'm executing this, how many jobs it is doing? It is in this stored procedure in the current SP underscore orders. It is doing 2 jobs. What type of 2 jobs it is doing? When you see the code, here we have two select one statement is insert statement, ठीक है? ये अभी यहाँ पे देखे तो ये यहाँ तक हो रहा, अभी फिर से सिलेक्ट हो रहा, ये दूसरा स्टेटमेंट है. तो 2 स्टेटमेंट्स हो रहा. तो 2 स्टेटमेंट्स के 2 आंसर्स आना है. तो अगर एग्जीक्यूट करे तो ये एग्जीक्यूट करते ही, अगर ये एग्जीक्यूट करते ही क्या आ रहा, ये एक तो न्यू ऑर्डर आईडी आया, न्यू ऑर्डर आईडी बता रहा, फिर भी और एक जॉब भी हो रहा कि ये 127 का भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक है? 127 का ठीक भी है। इंसर्ट हो जा रहा है. 2 जॉब्स हो रहा, एक तो ये तो बता रहा, 8 बोल के बताया ना, हाँ। 8 बोल के बताया ना, 2 जॉब्स कर रहा, वो ये बोल रहा. इट इज डूइंग 2 जॉब्स एंड शो ऑर्डर्स. It displays a list of all orders from something called view orders. Think of this is a report that can show all the orders in a neat table. Yeah, वो तो बता रहा है. And a new order, it lets you add a new order to the orders table where the canteen keeps tracking of the things like token number. How does it works? Imagine you are running a canteen and you have a computer system to track of orders. This stored procedure is like a tool in that system. Here how it works step by step in plain language. What you tell it inputs. The procedure needs some information from you to know what to do. These are called parameters. ये तो parameters है, ये सब parameters है. Like हाँ। filling out a form, action. This is the main instruction. You tell it either select means show all orders, show me all orders. Insert means add a new order. Token number add give. अभी देखो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा, तो यहाँ से इंसर्ट कर रहा, ये बोल रहा, बाद में टोकन नंबर दे रहा, ये टोकन नंबर दे रहा, जैसा टिकट नंबर होता है. बाद में बिल नंबर दे रहा, वो यूनिक होता है. बाद में ग्रैंड टोटल हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कैसे? यस। ग्रैंड टोटल ये सब कुछ यहाँ तक कैशियर आईडी तक आपको समझ में आ गया. तो हम्म। बाद में क्या है कि ये समझ में आने के लिए देन इंसर्ट इनटू, ये सब हो गया, ये सब हो गया. What you get back? What you get back? It is fine. Show all orders. Fine. What happens? The system takes that 125 billion. Okay. It gives you this means all fine. The example: what if you make a mistake try adding without a grand total? ओके. सब ये सारे कुछ समझ में आने के लिए
आपको कुछ और बताना पड़ता है, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहे हैं क्या? सारे कुछ। क्या? उसी के लिए मैं, आप काम करते तब बहुत समझ में आता है, ठीक है। कौन सा? यही काम करे तब हाँ। बहुत समझ में आता है, ऐसा हाँ। आसानी में समझ में आएगा तो वो भी तरीका नहीं है, मगर कुछ समझ, जो भी चीज समझ में नहीं का है वो तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। हाँ। और ऊपर से रिकॉर्ड भी हो रहा, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, द ऑर्डर टेबल इज लाइक द कैंटीन ऑर्डर्स बुक स्टोरिंग डिटेल्स एंड द प्रोसीजर इज लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट डिटेल व्हाट, ठीक है। बट so we will alter the position now, no, not this. uh, so I'm stopping this today, we will stop this, but the thing is, uh, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि क्या? uh, ये देख लिया तो बोल रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे लास्ट में देख लिया तो, लास्ट में नहीं, यहाँ पे हाँ, हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूट कर रहा है ना, एग्जीक्यूट करे तब, आप देख लिया तो एग्जीक्यूट करे तब, ये देख ले यहाँ, हाँ। ये देख रहे ना, हाँ। अगर एग्जीक्यूट करे तब तो ये बोल रहा है कि ये कुछ क्लाइंट को दे देता है। ये क्लाइंट इतना सारे कुछ तो नहीं बन रहा ना मैडम, ये सारे कुछ क्लाइंट तो नहीं बन रहा है, सिर्फ सिर्फ उसका काम दूसरा रहता है, और ये ऑर्डर्स का टेबल ना, ये ऑर्डर्स का टेबल भी, ये ऐसा तरीका ही नहीं है। आज मैं कुछ बनवाता हूँ आपके लिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप ये ऑर्डर्स टेबल है ना, ये ऑर्डर्स टेबल पहले अपन तब इंसर्ट करे तब, कुछ करे तब वो इतना 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 क्या बोलते हैं, क्या? आ, दिक्कत दिया, तकलीफ आया, एरर्स आया ना, इंसर्ट किया तब क्यों हाँ। हाँ। आया, से। इंसर्ट करे तब क्यों आया बोले तो, ये सारे कुछ क्या है, क्या आप है? ऐसा ये क्या है, डेटाबेस, कैंटीन, स्क्रिप्ट डेटाबेस, क्रिएट टू क्वेरी डेटा, so what do we have, so create database list and containment on execute alter, ये क्या है, अल्टर डेटाबेस एग्जीक्यूट करने में पूरा डेटाबेस की कैसे क्रिएट करते हैं वो है, मगर मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि स्टोर्ड में जो भी बात, मेरा हाँ, कि अभी जो भी कैंटीन बिलिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर कितना भी टेबल्स है, ये टेबल्स है, आप देख सकते हैं, एक कैशियर है, कस्टमर्स है, आइटम्स है, ऑर्डर्स है, ये सब है, ये मगर इसका स्कीमा कैसे लेना है, इसका स्कीमा लेना है पहले टेबल्स में, डेटाबेस डायग्राम्स, इसको भी एक बार ऐसे करेंगे, न्यू डेटाबेस डायग्राम, इंस्टॉल डेटाबेस सपोर्ट रिपोर्ट्स, सिस्टम रिपोर्ट्स, ये भी नहीं आता, दिस डेटाबेस डज नॉट हैव enough support of this no, इसका स्कीमा बताओ ना, किसका? इसका डेटाबेस, इसका ये, हाँ, मेमोरी ग्राफ टेबल, टेबल टेबल एक्शन, फाइल टेबल में स्कीमा कैसा होता है, कैसा कैसा लेके आना फाइल टेबल्स, पता है रुको, रुको मैं बता रहा हूँ आपको, functions database assembly suite security database, when I ask this I mean, ठीक है, छोड़ दो, इतना तक रिकॉर्ड करने भी वेस्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। ये ऑर्डर कैंटीन बिलिंग सिस्टम है ना, मेरा बात ये है कि वो तब हाँ। क्यों ऐसा दिया कि ऑर्डर टेबल, ऑर्डर आइटम्स टेबल, ये सब कुछ कैसे होना, सिर्फ हाँ। एक टेबल रिकॉर्ड, एक टेबल में डेटा आ रहा, तो सारे हाँ। टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट होना है, हम इंसर्ट नहीं करना है उसमें, ठीक है।
ठीक है, उसी के लिए वो टेबल्स ऐसा हो गया, बोले तो वो दिक्कत दिया, तब हम इंसर्ट कर एरर रहा है, आया। एरर आ रहा है, समझ में आया ना? हम्म। हम्म। हाँ, वो पहले स्कीमा पता होना है। तो स्कीमा कैसा पता होता है कि हाउ टू गेट द स्कीमा, विल आस्क दैट आल्सो व्हेन वी विल वर्क विथ एआई, हाउ टू गेट स्कीमा. सो आई, टुडे इज ओवर क्या? हाँ हो गया. ओके। आप मैं कल के लिए अच्छा वो बना के आपको बेहतर समझ में लेने के लिए सोचता हूँ, ठीक है, ये तो क्लोज